Hi everyone, and welcome back to the official channel of LegalEdge. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Audible and visible. Chal. All right. So let's start with our session. I hope you all are doing fine. ठीक है सेशन को स्टार्ट करते हैं अब देखो आज के सेशन में स्लॉट वन में मैंने जैसा आपको कहा था दैट देयर आर सर्टेन पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जिनको आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो व्हिच मींस यू विल हैव प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन व्हिच meant you will have questions without principle attached to the given factual situation and along with that constitution is one such area जिससे related कुछ ना कुछ questions आप expect कर सकते हो तो as far as the analysis of the slot one goes there were certain questions which are based on the sources of the Indian constitution along with certain other things as well ठीक है तो अब हम आज के सेशन में क्या कंडक्ट करने वाले हैं सो देयर आर टू थिंग्स विच विल बी कवरिंग टुडे ठीक है वन विल बी रिलेटेड टू कि एक तो हम आज लैंडमार्क केसेस रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनको डिस्कस करेंगे ठीक है फर्स्ट थिंग फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लैंडमार्क केसेस related to the constitution of India and the second thing which we'll do is that we'll again solve certain multiple choice questions based on the constitution of India ठीक है ये दोनों चीजें हम आज के सेशन में कवर करेंगे वन थिंग इज योर लैंडमार्क केसेस these landmark cases will be primarily related to the constitution of India only and secondly we'll be covering multiple choice questions related to the constitution of India ठीक है शुरू करें फिर भाई किसी का कोई सवाल हाँ जी डू वी हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन कितनी देर तक चलेगा सो रोहित यू कैन एक्सपेक्ट ठीक है यू कैन एक्सपेक्ट कि द सेशन विल बी somewhat around 1.5 hour long क्योंकि हमें केसेस भी डिस्कस करने हैं then we'll be solving certain 40 45 or 50 odd questions related to the constitution of India ठीक है ठीक है पूर्वी आई कम्युनिकेट दिस पर्टिकुलर थिंग टू द बैक एंड टीम ठीक है अगर पॉसिबल हो पाएगा तो आपको पता चल जाएगा ठीक है अगर पॉसिबल होगा तो विल अलाइन अ क्यूटी का सेशन एज वेल फॉर योर एग्जामिनेशन ठीक है शुरू करें फिर तो देखो व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ ऑलवेज रिमेंबर दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ स्टैटिक टेक्स्ट इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड व्हेन वी से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ काइंड ऑफ अ लिविंग डॉक्यूमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन की वो लाइवलीनेस सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट्स उस चीज को इंश्योर नहीं करते that the Parliament of India is having an option of amending the Constitution under Article 368 of the Constitution of India. So that is not the only thing which actually maintains the liveliness of the Constitution of India. It is about the interpretation of the Constitution of India as well, जो कि टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता रहता है एंड उस इंटरप्रिटेशन के थ्रू वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को रेगुलर बेसिस पे इवॉल्व भी करवाता है ठीक है सो कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ स्टैटिक टेक्स्ट and this presentation will explore the landmark cases that have defined defended and expanded the core principles of the Indian Constitution एंड प्राइमरली अगर हम फेजेस में डिवाइड करें ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट को सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 1950 से 60s का एक फेज था विच वाज द फाउंडेशनल ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया अभी अभी रिपब्लिक बना था इंडिपेंडेंट हुआ था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक अलग अप्रोच के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रोच करा फिर 70s के एरा में जब आप आओगे 70s और 80s के एरा में जब आप आओगे तो यू विल सी अ प्रॉपर टसल गोइंग ऑन बिटवीन द गवर्नमेंट विच वाज वेरी पावरफुल एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जहां पर सुप्रीम कोर्ट डिफेंसिव पोजीशन में आकर कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने की कोशिश करेगा फिर 90s और अर्ली 2000 के केसेस को अगर आप देखोगे 80s लेट 80s और 90s के केसेस को आप देखोगे ना तो वहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की लिबरल अप्रोच दिखेगी वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की यू विल फाइंड द सोशलिस्ट अप्रोच जहां पर वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड आर्टिकल्स को इस तरीके से इंटरप्रेट करेगा सो दैट मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द पीपल कैन बी अटेन्ड एंड फिर अर्ली 21st सेंचुरी में अगर आप देखोगे ठीक है अर्ली 21st सेंचुरी में अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अप्रोच देखोगे टुवर्ड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन यू विल रियलाइज कि अर्ली 21st सेंचुरी में सुप्रीम कोर्ट एक स्टेप जाकर और लिबरल होता जाता है जहां पर वो लोगों की प्राइवेसी उनकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से जजमेंट्स प्रोवाइड करेगा ठीक है सो
when it comes to the foundational years of the Constitution of India, na, it was about forging a republic that is defining the rules of the governance and liberty. And in the first 2 decades, the Supreme Court grappled with the new Constitution's text and it established the initial boundaries between the state power and individual rights, setting the stage for the epic conflict over the Parliament's power to amend the Constitution, जिसका हमें final phase अर्ली 1970s में देखने को मिलेगा. ठीक है. So first case की अगर हम बात करें, so one of the first case which came in front of the Supreme Court of India was the case of A.K. Gopalan versus State of Madras, and this was primarily related to Article 21 of the Constitution of India. Article 21 सबने पढ़ा होगा, है ना, which is about protection of life and personal liberty. Yes or no? Right? Article 21 सबने पढ़ा होगा, जहां पर you must have read about protection of life and personal liberty, and उसमें अगर हम बात करें, ठीक है, तो Article 21 of the Constitution of India says that Article 21 of the Constitution of India says that no person shall be deprived of his life and personal liberty except in accordance with procedure established by law. Yes or no? This is the text of Article 21 of the Constitution, that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law. मतलब एक लॉ होगा, उसने एक प्रोसीजर ले डाउन किया होगा, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए स्टेट किसी भी पर्सन की लाइफ और लिबर्टी को डिप्राइव कर सकता है. A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस प्राइमरली इसी प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को लेकर था. हुआ क्या था, उन इनिशियल टाइम पीरियड में A.K. गोपालन was actually arrested by the state of Madras under the preventive detention laws. एंड मेरे ख्याल से इतना सारा कॉन्स्टिट्यूशन या इतना सारा बेसिक लॉज आप पढ़ चुके होंगे दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज वन सच फील्ड ऑफ लॉ जहां पर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है ना. एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर किसी भी पर्सन को डिटेन करते वक्त स्टेट कैन ऑल्सो डिनाई टू प्रोवाइड हिम विद द रीजंस फॉर हिज डिटेंशन. यस और नो? यहां पर भी यही हुआ. A.K. गोपालन को डिटेन कर लिया गया एंड ही वाज नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑडी ऑल्ट्रम partum as well. And therefore, he stated in the case that because preventive detention laws violate natural justice, okay, therefore, preventive detention laws should not be considered as constitutionally valid. Background of the case समझ में आया भाई? A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का, कि क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस किसी भी एक्सटेंट पे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं. मतलब the law in itself is not just fair and reasonable, and therefore he went to the Supreme Court of India claiming that these laws cannot be considered as constitutionally valid because they violate the basic principles of natural justice as well. तो वो वहां पर क्या क्लेम करने की कोशिश कर रहे थे, that Article 21 of the Constitution should include due process of law as well. ठीक है, कि आर्टिकल 21 को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो करना चाहिए. बट जब हम केस को देखते हैं, सो द कोर क्वेश्चन ऑफ द केस वाज दैट does procedure established by law under Article 21 require the law itself to be fair and just, which is all about the concept of due process of law. Yes or no guys? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे, है ना. लॉ का जस्ट फेयर और रीजनेबल होना, लॉ का जस्ट फेयर और रीजनेबल होना इज समथिंग इट इज रिलेटेड टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. तो कोर क्वेश्चन यही था कोर्ट के सामने. एंड द सुप्रीम कोर्ट बेसिकली टुक अ नैरो व्यू, holding that a law affecting life and liberty could not be declared unconstitutional merely because it lacked natural justice. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई किसी भी लॉ को हम सिर्फ इस बेसिस पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो लॉ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं कर रहा. And it strictly differentiated between the American due process of law and India's procedure established by law, giving the state significant power under the Preventive Detention Act of 1950. तो A.K. गोपालन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आर्टिकल 21 में इंक्लूड करने से मना कर दिया। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट लैंडमार्क केस ऑफ द इनिशियल ईयर्स। अगले केस को जब हम देखते हैं तो दैट्स द केस ऑफ शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, which is the first case in that entire saga of the evolution of doctrine of basic structure, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर तो सबको पता होगा, जो केशवानंद भारती के जजमेंट से आई। ठीक, उसकी शुरुआत आती है आपकी शंकरी प्रसाद के केस से। एंड शंकरी प्रसाद के केस में, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, प्राइमरी क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज दैट व्हिच वन इज मच मोर सुप्रीम, whether Article 13 or Article 368. And another question was that amendments done in the exercise of the constituent power of the parliament, ठीक है, पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की एक्सरसाइज है उसमें किए हुए अमेंडमेंट्स क्या फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट कर सकते हैं। सो द प्राइमरी क्वेश्चन वाज इन शंकरी प्रसाद दैट वेदर पार्लियामेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर amend part 3 of the constitution of India or not। एंड मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा कि शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को एक तरीके से एब्सोल्यूट पावर प्रोवाइड कर दी। ठीक है, सो द कोर क्वेश्चन इन द केस ऑफ शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज दैट कैन पार्लियामेंट यूज इट्स अमेंडमेंट पावर अंडर आर्टिकल 368 टू अब्रिज द फंडामेंटल राइट्स और टू वायलेट द फंडामेंटल राइट्स, yes or no। And the judgment in brief was that the court unanimously held that power to amend the constitution was absolute and unlimited। ठीक है, शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जो पार्लियामेंट की पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज एब्सोल्यूट, इट इज अनलिमिटेड, एंड इट रीजनड दैट constitutional amendment is not a law under article 13 clause 2 and therefore cannot be challenged for violating fundamental rights। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद का केस क्लियर है भाई। शंकरी प्रसाद के केस से पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर मिल गई टू अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3 एज वेल। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला केस था हमारा इन रे बेरुबरी यूनियन केस। ठीक है, जहां पर प्राइमरली सुप्रीम कोर्ट के सामने दो क्वेश्चंस थे। ठीक है, इन रे बेरुबरी यूनियन केस जहां पर पार्लियामेंट के सामने, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के सामने प्राइमरली दो क्वेश्चन थे। एक तो ये क्वेश्चन था, इज प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वेदर प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट। एंड सेकंड क्वेश्चन वाज कैन पार्लियामेंट सीड इंडियन टेरिटरी थ्रू ऑर्डिनरी लॉ। बेरुबरी यूनियन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के बीच के कुछ लैंड एक्सचेंज को लेकर इशू था। अब पॉइंट ये था कि जो लैंड एक्सचेंज करना है, क्या गवर्नमेंट वो एग्जीक्यूटिव पावर के थ्रू कर सकती है या नॉर्मल लॉ बनाकर कर सकती है कि अगर हमें टेरिटरी अपनी सीड करनी है किसी और को। क्योंकि देखो, जब हम बात करते हैं इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री का, तो वो तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर की एक्सरसाइज के फॉर्म में हो जाता है। बट अगर गवर्नमेंट अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को सीड कर रही है, वो किस तरीके से होगी। दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन इन द केस ऑफ इंडे बेरुबरी यूनियन, एंड द सुप्रीम कोर्ट in this case held that while preamble is a key to open the minds of the framers of the constitution, it is not a part of the constitution itself। ठीक है, वहां पर इंडे बेरुबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई प्रियम्बल इंपॉर्टेंट चीज तो है, ठीक, इट इज अ की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज नॉट समथिंग व्हिच कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ। तो इंडे बेरुबरी यूनियन में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को पार्ट कंसिडर करने से मना कर दिया। एंड सेकेंडली इट स्टेटेड दैट इट रूल्ड दैट ceding territory to a foreign country requires a constitutional amendment under Article 368 and not just a simple legislative act। कि अगर इंडिया को अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को सीड करनी है, कुछ एक्सचेंज करना है, सो दैट पर्टिकुलर थिंग कैन टेक प्लेस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसको ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज द केस ऑफ इंडे बेरुबरी यूनियन। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस वाज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, वही लड़ाई अभी भी चल रही थी उसी चीज को लेकर कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 को यूज करके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उस एंटायर एपिसोड में बहुत सारी केसेस दिखेंगे आपको। शंकरी प्रसाद था, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान था, फिर सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट आया उस एंटायर इशू में, दैट वाज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का जजमेंट था। ठीक है, जहां पर कोर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट वाज
It was reconsidering the Shankari Prasad case, as in, are fundamental rights truly amendable by the parliament or not? ठीक है, तो गोलकनाथ के केस में प्राइमरी क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने यही था कि फंडामेंटल राइट्स ट्रूली अमेंडेबल हैं या नहीं है। एंड यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट चेंज कर दिया। ठीक है, यहां पर an 11 judge bench in a landmark decision reversed its earlier stance, and it declared that parliament could not amend part 3 of the constitution। ठीक है, अपने पुराने जजमेंट को चेंज कर दिया यहां पर, एंड ये कह दिया पार्लियामेंट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड नहीं कर सकता। And the ruling stated that the limitation under Article 13 applies to the constituent power of the Parliament as well, कि वो जो Article 13 का limitation है वो exercise of constituent power of the Parliament पे भी apply करता है। And just one thing, that the court introduced the concept of prospective overruling, in this particular केस। ठीक है, सो आई गेस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब भी क्लियर होगा सबको, समझ में आ रहे हैं ना भाई केसेस? हम ब्रीफ में पढ़ते हुए चल रहे हैं इन केसेस को, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि इन सारे केसेस की बैकग्राउंड की स्टोरी आप सबको पता होगी। ठीक है, चलो अगला केस देखते हैं। फिर 1960s के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट फेज आ जाता है, दैट्स द एरा ऑफ 1970। And era of 1970 was about crisis and correction, and it was the battle of constitutional supremacy which was unfolding in this particular decade. And this decade witnessed the ultimate constitutional showdown. The invention of basic structure doctrine faced the darkness of emergency, okay, and ultimately began a profound expansion of personal liberty. So this was the era of 1970. एंड 1970s के एरा में जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है, दैट्स द जजमेंट ऑफ केशव एंड भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, ऑफ 1973। एंड अगेन द कोर क्वेश्चन वाज दैट आफ्टर गोलकनाथ, इज पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रूली अनलिमिटेड? क्योंकि गोलकनाथ को ओवर रूल करने के लिए पार्लियामेंट कुछ अमेंडमेंट लेकर आ गया था, जिसके थ्रू फिर से उन्होंने अपनी पावर को अनलिमिटेड कर लिया था। तो अगेन क्वेश्चन वही था कि क्या पार्लियामेंट की अमेंडमेंट की पावर अनलिमिटेड है? एंड फिर सुप्रीम कोर्ट ने केशव एंड भारती के जजमेंट में बड़ी ब्यूटीफुली एक मध्यम मार्ग निकाला, जिस मध्यम मार्ग को उन्होंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अ हिस्टोरिक 13 जज बेंच with the majority of 7:6 found a middle path, that is parliament can amend any part of the constitution including fundamental rights। कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकता है, इवन फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड कर सकता है, but it cannot alter the basic structure or the fundamental framework of the constitution. So it is the Keshav and Bharti judgment which is responsible for the evolution of the basic structure of the constitution, and this judgment established constitutional supremacy over parliamentary sovereignty। ठीक है, वो टसल ही था पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है या कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। एंड केशव एंड भारती के जजमेंट में वो चीज सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दी, जहां पर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट इन द कंट्री, इट इज द सुप्रीम थिंग एंड यू कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्लियर? फिर अगला केस जो आया, दैट वाज द केस ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। दिस वाज द केस ऑफ 1975, and this verdict is something which actually famously triggered the declaration of internal emergency in the country। हुआ क्या कि जब इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को चैलेंज किया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट में, एंड इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके 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 उस इलेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। फिर वो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लेकर आती है, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, जहां पर यह डिसाइड किया गया कि भाई पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस को आप जुडिशियल रिव्यू में लेकर नहीं जा सकते। सो कोर क्वेश्चन इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण की केस का था दैट कैन पार्लियामेंट प्लेस द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शन बियॉन्ड द स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट्स। ठीक है, एंड द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस struck down the 39th Amendment Act, which attempted to remove judicial review for the court's review for the PM's electoral disputes। अच्छा, I'm so sorry, that was 39th Constitution Amendment Act। ठीक है, so 39th Constitution Amendment Act के थ्रू प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू के बाहर निकाल दिया था। कोर्ट ने कहा दिस इज नॉट वैलिड, एंड इट रीअफर्म्ड दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड जुडिशियल रिव्यू आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड क्योंकि आप बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकते,
तो आप इलेक्शंस को भी जुडिशियल रिव्यू के बाहर लेकर नहीं जा सकते। ठीक है। सो दिस वाज द केस ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। अब 70s के डेकेड में देयर वाज अ ब्लैक स्पॉट विद इन द जुडिशरी और बिकॉज ऑफ द जजमेंट, जिसको सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री का एक ब्लैक स्पॉट माना जाता है। दैट्स द केस ऑफ एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। दिस वाज द केस ऑफ 1976। मेरे ख्याल से इतना आप सब लोगों को पता होगा कि इमरजेंसी, जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है, राइट, whenever emergency is promulgated within the country, so emergency actually leads to the suspension of enforcement of fundamental rights. Yes or no? Article 358 and 359 of the Constitution. Article 358 in itself leads to the suspension of Article 19, and Article 359 ये प्रोवाइड करता है कि बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट सस्पेंड किया जा सकता है। मतलब अगर स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो यू कैन नॉट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट बाय वे ऑफ रिट्स। एंड जब इंटरनल इमरजेंसी कंट्री में इंपोज की गई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उस इंटरनल इमरजेंसी के अंडर मीसा नाम का एक एक्ट हुआ करता था, which was Maintenance of Internal Securities Act. This was a preventive detention law. And इस preventive detention law को यूटिलाइज करके बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया। एंड जब भी आप किसी पर्सन को डिटेन करते हो तो दैट इज समथिंग विच विल अमाउंट टू द infringement of Article 21 of the Constitution, which is about right to life and personal liberty of the Constitution of an individual. बट पॉइंट ये था कि आर्टिकल 21 अगर इमरजेंसी की वजह से सस्पेंडेड है, तो whether the citizens of the country can approach the courts for enforcement of their Article 21 by way of writs. This was the primary question in the case of ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla. So the core question was that can a citizen seek a writ of habeas corpus during an emergency when fundamental rights are suspended? And यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही प्रो गवर्नमेंट जजमेंट दिया, wherein the Supreme Court basically stated that Article 21 का enforcement भी suspend किया जा सकता है, and in what is considered widely considered the court's darkest hour, a 4:1 majority held that writ of habeas corpus would remain suspended during the emergency. कि इमरजेंसी के टाइम पे रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस भी सस्पेंडेड रहेगी, एंड दिस इफेक्टिवली रिमूव्ड ऑल जुडिशियल प्रोटेक्शन फॉर सिटीजंस चैलेंजिंग देयर detention. ठीक है, but subsequently this judgment remained a blot on the judiciary until it was formally overruled in 2017 by Justice K.S. Puttaswamy judgment. ठीक है, फाइनली 2017 में जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट में एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला को ओवररूल किया गया। उसके पहले एक ब्लॉट की तरह कंसिडर किया जाता था ओवर द इंडियन जुडिशरी। ठीक है, क्लियर है भाई यहां तक? चल अगला केस देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इन दिस डेकेड वाज द केस ऑफ मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, wherein again the question was that after the emergency, what is the true scope of the right to life and personal liberty? यहां पर भी मनेका गांधी के केस में वो प्राइमरली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंक्लूड करवाना चाह रही थी। ठीक है, दैट जिस भी लॉ के थ्रू किसी भी पर्सन के लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को अगर डिप्राइव किया जा रहा है, तो दैट लॉ इन इटसेल्फ शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। यही प्राइमरी कंटेंशन था मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस का। एंड द सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस कंप्लीटली ओवरटर्न्ड द एके गोपालन रीजनिंग। एके गोपालन के जजमेंट को ओवरटर्न किया गया, ठीक है, मनेका गांधी के जजमेंट में। एंड द कोर्ट हेल्ड दैट procedure established by law must be fair, just and reasonable, effectively reading due process of law into Article 21, and the scope of Article 21 was expanded to include the right to travel abroad and right to live with human dignity as well. ठीक है, आर्टिकल 21 में राइट टू ट्रैवल अब्रॉड को भी रीड किया गया, एंड आर्टिकल 21 में राइट टू लिव विद डिग्निटी को भी ऐड कर दिया गया। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाज इंक्लूडेड विद इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर क्लियर। फिर हम आते हैं 80s और 90s के डेकेड में। जब आप 80s और 90s के डेकेड पे आओगे ना, so the court was actually acting as a catalyst, wherein it was championing social justice and governance for the people of this country.
ठीक है. And in this particular decade, the court embraced its role as an activist institution, expanding rights for the disadvantaged, shaping reservation policy, protecting secularism, and ensuring government accountability through innovations like public interest litigation. जैसे हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार बिकेम द केस, जिसके थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया विद इन द कंट्री. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर एरा के अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को देखें ना, तो जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस आता है इसमें हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन द ईयर 1979, wherein the court recognized that right to speedy trial is an essential part of Article 21 and laid the foundation of public interest litigation for the rights of under trial prisoners. ठीक है. राइट टू स्पीडी ट्रायल भी आपके आर्टिकल 21 का पार्ट है. दिस वाज समथिंग व्हिच वाज लेड डाउन इन द केस ऑफ हुसैन आरा खातून, जहां पर पीआईएल के फाउंडेशन को भी ले डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने. फिर अगला जो इंपॉर्टेंट केस आया इस डेकेड में, दैट वाज द केस ऑफ मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम. ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मेंटेनेंस के रिस्पेक्ट में, है ना. मेंटेनेंस को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो सबसे पहला लैंडमार्क केस था, दैट वाज द केस ऑफ मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, wherein the Supreme Court prioritized the secular law, which was Section 125 of CRPC, over personal law to grant maintenance to a divorced Muslim women, sparking a national debate. But still, the Supreme Court acted as a catalyst to protect the interest of the disadvantaged group over there. तो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पर्सनल लॉ में चाहे कुछ भी लिखा हो, सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर कोई भी पर्सन जाकर मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, इवन अ डिवोर्स्ड वाइफ एज वेल. ठीक है. फिर जब हम अगला केस देखते हैं, सो द नेक्स्ट केस वाज एसआर बोम्माई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1994. दिस वाज रिलेटेड टू द ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 356 प्राइमरली रिलेटेड है आपके प्रेसिडेंट्स रूल से, एंड प्रेसिडेंट रूल को कहीं पे भी अपनी मर्जी से लगाने की आदत पड़ चुकी थी गवर्नमेंट्स की, कि जब जिस स्टेट की गवर्नमेंट पसंद नहीं आई उसमें आर्टिकल 356 लगा दिया. तो वहां पर आर्टिकल 356 के उस ब्लेटेंट मिसयूज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई का जजमेंट दिया, wherein it sharply curtailed the misuse of Article 356 by making its proclamation subject to judicial review, protecting federalism and arbitrary state governments dismissal. कि ये कहा गया कि गवर्नर या प्रेसिडेंट का जो भी डिस्क्रिशन है, दैट डिस्क्रिशन इज नॉट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू. अगर कोर्ट को लगेगा कि मैलिफाइड इंटेंशन के साथ इंपोज किया गया है प्रेसिडेंट रूल को, तो वहां पर कोर्ट उसको रिवोक भी कर सकता है. ठीक है. फिर इंपॉर्टेंट केस आया इस डेकेड में इंदिरा साहनी का जजमेंट, which was primarily related to the introduction of reservation for OBC classes. मंडल कमीशन के बारे में आपने सुना होगा. मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किया गया 1989 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ वीपी सिंह. सब्सिक्वेंटली कंट्री में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए, एंड द वैलिडिटी ऑफ दैट 27% रिजर्वेशन व्हिच वाज गिवन टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज चैलेंज्ड इन द केस ऑफ इंदिरा साहनी. बट सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर इट अपहेल्ड द रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज. ओबीसी के रिजर्वेशन को उन्होंने अपहेल्ड किया, बट दे एस्टैब्लिश्ड द 50% सीलिंग लिमिट एंड इंट्रोड्यूसिंग द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट टू इंश्योर बेनिफिट्स रीच द ट्रूली डिजर्विंग. क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और उसके साथ 50% की सीलिंग लिमिट लगा दी with respect to reservation being provided in educational institution और public sector employments. ठीक है. फिर अगला इंपॉर्टेंट जजमेंट था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. इस केस का नाम तो आप लोगों ने सबने सुना होगा. दिस इज वन ऑफ द केसेस wherein the Supreme Court championed the cause of women as well. राइट. आर्टिकल 142 की एक्सरसाइज का बहुत ही एक क्लासिक एग्जांपल है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां पर विमेन एट वर्क प्लेसेस, उनके अगेंस्ट जब कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता था, तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को पनिश प्रोहिबिट करने का कोई स्कोप मैकेनिज्म था ही नहीं हमारी कंट्री में. एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट केम अप विद अ सेट ऑफ गाइडलाइंस which are actually utilized to manage the issues of sexual harassment at workplaces which was committed against women. So in Vishaka versus State of Rajasthan, in the absence of legislation, the court laid down binding guidelines for preventing sexual harassment at the workplace, imposing a duty on employers and defining the offense as well. So it was the case of Vishaka versus State of Rajasthan. फिर 80s 90s के डेकेड के बाद अगर हम मॉडर्न एज की बात करें 21st सेंचुरी की, 21st सेंचुरी में वन ऑफ द बेसिक डिमांड ऑफ एनी इंडिविजुअल इज प्राइवेसी. यस और नो? कि भाई वो सारी एक्टिविटीज जो पर्सन का एक प्राइवेट अफेयर है,
वो सारी एक्टिविटीज जो पर्सन की एक प्राइवेट स्पेस का पार्ट है, वो सारी चीजें जो उसकी डिग्निटी से रिलेटेड है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस एरा में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए. So the modern age, that is from 2000 to present, it was about redefining liberty, autonomy, and constitutional structure. So in the 21st century, the court's focus has turned towards decriminalizing private acts, reinforcing the independence of judiciary, and re-examining the framework of affirmative action for new generation. तो जैसे इस एरा में सबसे पहले इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की हम बात करें, तो दो बड़े इंपॉर्टेंट जजमेंट आ जाते हैं आपके. दैट्स द जजमेंट ऑफ नास फाउंडेशन एंड द केस ऑफ जोसेफ शाइन. ठीक है, नास फाउंडेशन का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जोसेफ शाइन का जजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. नास फाउंडेशन के जजमेंट में क्या किया गया? द इशू वाज चैलेंज टू सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड, which was actually penalizing homosexual activities between consenting adults. तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किया? द दिल्ली हाई कोर्ट रूल्ड दैट कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल सेक्स बिटवीन एडल्ट्स कैन नॉट बी क्राइम, though it was later overturned, but then again it was reaffirmed by the Supreme Court, and this was a pivotal moment कि जब प्रिवेसी को यहां पर अब धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया गया, उस वजह से बहुत सारे केसेस अब सुप्रीम कोर्ट के पास प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आना शुरू हुए. एंड यहां पर नाथ फाउंडेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि भाई इफ द एडल्ट्स आर कंसेंटिंग टुवर्ड्स ईच अदर, फिर द स्टेट इज हैविंग नो बिजनेस टू इंटरफेयर ओवर देयर. ठीक है, तो कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्ट्स को यहां पर डीक्रिमिनलाइज किया गया. एंड कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्ट्स को जब डीक्रिमिनलाइज किया गया, उसी वजह से आप आज देखते हो ना कि सेम सेक्स मैरिज के लिए भी रिकग्निशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सब्सिक्वेंटली केस फाइल हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज नहीं किया सेम सेक्स मैरिज को सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, बट स्टेप्स तो लेने शुरू किए गए, डिस्कशन तो होना स्टार्ट हुआ, राइट? फिर एक केस आया विच वाज द केस ऑफ जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, which was about the constitutionality of the crime of adultery, wherein women was actually treated as the chattel of the husband, and it was only punishing man within that particular act. So Joseph Shine के case में the Supreme Court decriminalized adultery, declaring that it is an archaic law which is violative of Article 14, 15 and Article 21 of the Constitution. कि भाई प्राइवेट मैटर है, पर्सनल चॉइस है, तो अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया. Because if the same act used to take place with the consent or connivance of the husband, वो एक punishable act नहीं होता था. But because it was taking place without the consent of the husband, तब punish किया जा रहा था. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई women या wife in a marriage is not a chattel of the husband or property of the husband, right? And therefore it was considered as violative of right to equality and right to dignity of the women. तो फिर यहाँ पर उसको उन्होंने decriminalize किया. फिर बेसिक स्ट्रक्चर या जुडिशियल स्ट्रक्चर की हम एवोल्यूशन की अगर बात करते हैं, तो वहां पे फर्स्ट जजेस केस, ठीक है, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, व्हिच गिव एग्जीक्यूटिव द फाइनल से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस. बट स्काउरा के दो जजमेंट्स के थ्रू यहां पर फाइनली कोलिजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, एंड फिर जब कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट एनजेएसी लेकर आई, तो उस एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया इन द फोर्थ जजेस केस इन द ईयर 2015, which was again Skowra versus Union of India, wherein the Supreme Court struck down the 99th Constitution Amendment Act and the NJC Act, declaring the independence of judiciary to be part of basic structure of the Constitution. फिर रिजर्वेशन को लेकर अगर हम इस 21st सेंचुरी में बात करें, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था, which was the judgment of जनहित अभियान versus Union of India, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वाज चैलेंज्ड. वो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है, बाय द 103rd अमेंडमेंट एक्ट, उसको चैलेंज किया गया इन द केस ऑफ जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. So the issue was validity of the 103rd amendment providing 10% reservation for economically weaker sections, and in a 3:2 majority the Supreme Court upheld the amendment extending the reservation benefits to include solely economic backwardness for the first time. सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस में पहली बार रिजर्वेशन को रिकॉग्नाइज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में. सो दीज आर सम ऑफ द लैंडमार्क केसेस, बट और भी हैं, जैसे जस्टिस केस पुट्टास्वामी जजमेंट, प्राइवेसी वाज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. फिर शायरा बानो बेगम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस. ठीक है, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, wherein right to internet was considered as an integral part of
Article 19 of the Constitution of India कि arbitrary internet shutdowns cannot be considered as a valid practice. ठीक है. So these are some of the landmark cases. Landmark cases को भी अच्छे से एक बार आप पढ़ के रख लेना, क्योंकि this is also something जिससे related questions आपसे पूछे जा सकते हैं in your examination. ठीक है. क्लियर है भाई? यहां तक आया आया यहां तक क्लियर है? क्लियर? चलो फिर. सो नाउ लेट्स सॉल्व सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं हम, है ना? चलो. सो अब कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू हैव is which of the following is not a valid restriction on the right of freedom of religion under article 25? इनमें से कौन सा ऑप्शन आर्टिकल 25 के ऊपर एक वैलिड रिस्ट्रिक्शन नहीं है? ए पब्लिक ऑर्डर, बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी इंडिविजुअल बिलीव्स, डी सोसाइटल सॉरी इज अ वैलिड रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, नॉट नहीं, इज अ वैलिड रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25. व्हाट्स द करेक्ट आंसर? ए, बी, सी और डी? हाँ जी. The correct answer is अरे बेसिक क्वेश्चन है. आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 स्टार्ट्स विथ इट्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ओनली. इट सेज दैट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो वैलिड रिस्ट्रिक्शन क्या हुआ? वैलिड रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 25 के हैं. वैलिड रिस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल 25 इंक्लूड्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, health and other provisions of part 3. morality की जब हम बात करते हैं तो it is not societal morality. Morality over there refers to constitutional morality, and therefore correct answer over here was option A, that is public order. ठीक है, clear? Ciao. Let's move to the next one. Now the next question is the right against exploitation under article 23 and 24 prohibits which of the following practices? The right against exploitation under articles 23 and 24 prohibits which of the following practices? A, religious conversions, B, human trafficking and forced labor, C, government censorship, or D, reservation in educational institution. What's the correct answer? क्या correct answer है भाई? हाँ जी. The correct answer is correct. So right against exploitation under article 23 and 24 basically prohibits human trafficking and forced labor. भाई फंडामेंटल राइट्स के तो क्वेश्चंस बनने चाहिए बेटा, ये तो बेसिक पार्ट है ना? फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस को स्किप आउट नहीं कर सकते हो आप, तो ये तो बनने ही चाहिए. ठीक है. So the correct answer over here was option B, that is human trafficking and forced labor. Chalo, let's move to the next one. Now, the next question is, which amendment removed the right to property from the list of fundamental rights and made it a legal right under Article 300A? Which amendment removed the right to property from the list of fundamental rights and made it a legal right under Article 300A? A, 42nd Amendment, B, 44th Amendment, C, 73rd Amendment, or D, 86th Amendment? What's the correct answer? Anji, the correct answer is correct. The correct answer is option B. It is 44th Amendment Act of 1978, which actually removed right to property from the list of fundamental rights and was made a constitutional right under Article 300A. Okay? Chalo, let's move to the next one. Now, the next question is, which of the following fundamental rights is not available to non-citizens of India? Okay? Which of the following is not available to the non-citizens, that is, which is not available to the foreigners in India? A, Article 14, B, Article 21, C, Article 19, or D, Article 22? What's the correct answer? Hanji.
करेक्ट आंसर इज करेक्ट, 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 वेरी गुड. Article 19 is only thing which is available to the citizens of this country out of all the options mentioned over there. Because Article 13 is about right to freedom of citizens. है ना? ये persons को मिला है, ये person को मिला है, ये भी person को मिला है. Article 19 is only available to the citizens of this country. ठीक है? चलो, let's move to the next one. Now, the next question is, which of the following statements regarding Article 14, that is right to equality, is incorrect? Which of the following statements regarding Article 14, that is right to equality, is incorrect? हमें incorrect statement identify करना है. A, it guarantees equality before law and equal protection of law. B, it allows for classification but prohibits class legislation. C, it applies only to the citizens of India. D, it forms the basis for judicial review of discriminatory laws. What's the correct answer? हाँ जी, क्या correct answer है भाई? Which of the following statement is incorrect? Correct, correct. The incorrect statement is option C. Because Article 14 is available to citizens and aliens as well. Okay? So the correct answer over here was option C. Chal. Let's move to the next one. Now, the next question is, which landmark judgment introduced the due process law of law doctrine into Indian jurisprudence by expanding the scope of Article 21? Which landmark judgment introduced the due process of law doctrine into Indian jurisprudence by expanding the scope of Article 21? A. A.K. Gopalan versus State of Madras. B. Maneka Gandhi versus Union of India. C. R.C. Cooper versus Union of India. D. Golaknath versus State of Punjab. What's the correct answer? हाँ जी, क्या करेक्ट आंसर है भाई? The correct answer is correct. Correct. The correct answer over here is option B. It is Maneka Gandhi versus Union of India, which introduced the concept of due process of law into Indian jurisprudence. डिमांड A.K. गोपालन में सबसे पहली बार की गई थी, अभी हमने डिस्कस किया था, है ना? बट इसमें एक्सेप्ट नहीं किया गया था उस चीज को. सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन बी. ठीक है, चल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a writ under Article 32 of the Indian Constitution? Which of the following is not a writ under Article 32 of the Indian Constitution? A. Habeas corpus. B. Mandamus. C. Certiorari. Or D. Stare decisis. What's the correct answer? Which of the following is not a writ? A, B, C, or D? So the correct answer is, देखो, हेबियस कॉर्पस तो रिट है, मैंडमस भी रिट है, सर्श्योररी भी रिट है. स्टेयर डिसाइसिस बेसिकली डॉक्ट्रीन है which talks about a particular case being considered as a precedent. ठीक है, एक केस प्रेसिडेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा. दिस इज द डॉक्ट्रीन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस. बाकी सब तो रिट्स हैं ही. ठीक है, चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which case or which case held that reservation in promotions is not a fundamental right under the Indian Constitution? Which case held that reservation in promotions is not a fundamental right under the Indian Constitution? कि भाई प्रमोशंस में रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं होगा. ए. इंदिरा सावनी. बी. एम. नागराज. सी. जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता. और डी. अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. What's the correct answer? हाँ जी, क्या करेक्ट आंसर है भाई? तो देखो, reservation in promotions is not a fundamental right under the Indian Constitution was actually declared in the case of Indira Sauni versus Union of India. ठीक है, नहीं समझना बेटा इस चीज को, उस प्रोसेस को समझो. इंदिरा सावनी के केस में कोर्ट से यह पूछा गया, क्या प्रमोशन में भी रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा? कोर्ट ने कहा नहीं होगा. एम नागराज के केस में कोर्ट ने कहा कि प्रमोशंस में रिजर्वेशन देना एक वैलिड चीज होगी, बट इसके लिए स्टेट को बैकवर्डनेस का डेटा कलेक्ट करना होगा.
ठीक है, the state will have to quantifiably correct or collect quantifiable data of backwardness of a particular community to give them reservation in promotion. ठीक है, कि भाई वो पर्टिकुलर जो कम्युनिटी जिसको आप प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाह रहे हो वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, इसका डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण गुप्ता का जो केस था, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, इसमें कोर्ट ने कहा कि बैकवर्डनेस का डेटा भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब भी किसी कम्युनिटी को बैकवर्डनेस की बैकवर्ड कम्युनिटी की कैटेगरी में रखा जा रहा है तो ऑलरेडी एक बार डेटा कलेक्ट हो चुका होगा ना, तभी तो प्रेसिडेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने उसको बैकवर्ड कम्युनिटी की कैटेगरी में रखा है। तो बार बार आप वही डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हो? इसलिए लक्ष्मी नारायण गुप्ता के केस में कोर्ट ने कहा कि आपको बैकवर्डनेस का डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट रिजर्वेशन प्रमोशन में वैलिड ही नहीं होगा या फंडामेंटल राइट नहीं होगा। दिस वाज डिक्लेयर्ड इन द केस ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article protects individuals from self incrimination? Which article protect individuals from self incrimination? Protection from self incrimination किस आर्टिकल में गिवन है? A आर्टिकल 22, B आर्टिकल 20 क्लॉज 3, C आर्टिकल 20 क्लॉज 1 और D आर्टिकल 20 क्लॉज 2। व्हाट्स द करेक्ट आंसर? हाँ जी, क्या करेक्ट आंसर है? ए, बी, सी और डी? प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, देखो आर्टिकल 22 रिलेटेड है अरेस्ट एंड डिटेंशन से, है ना? आर्टिकल 22 इज रिलेटेड टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। 20 क्लॉज 1 इज रिलेटेड टू एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। 20 clause 2 is related to double jeopardy. So it is article 20 clause 3 which gives us protection from self-incrimination, which says that no person shall be compelled to be a witness against himself. ठीक है, तो वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला प्रोटेक्शन हमारे पास आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से आता है। ठीक, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements about right to property is correct? Which of the following statement about right to property is correct? A, it is a fundamental right under Article 19. B, it was removed from Part 3 by the 42nd Amendment. C, it is now a constitutional right under Article 300A. Or D, the Supreme Court cannot review laws violating the right to property. क्या करेक्ट आंसर है भाई? Which of the following statement regarding right to property is correct? हाँ जी, so the correct statement is correct everyone. The correct statement is it is now a constitutional right under Article 300A. Supreme Court review कर सकता है. It was removed by 44th Amendment. It is not a fundamental right anymore. So the correct answer was option C over here. ठीक है, चलो let's move to the next one. Now, the next question, correct. The next question is that the Nehru report in 1928 was drafted in response to which of the following? The Nehru report in 1928 was drafted in response to which of the following? A, Montague-Chelmsford reforms, B, Simon Commission, C, Cripps Mission और D, August Offer। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो नेहरू रिपोर्ट किसके रिस्पॉन्स में ड्राफ्ट की गई थी? हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर? करेक्ट बेटा, करेक्ट। नेहरू रिपोर्ट वाज एक्चुअली ड्राफ्टेड इन रिस्पॉन्स टू साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वाज एक्चुअली एन ऑल इंग्लिश मेंबर कमीशन। ठीक है, सारे के सारे उसमें ब्रिटिशर्स थे। तो इंडियंस से उस वक्त के ब्रिटिशर्स ने कहा था कि भाई आप लोग क्या बनाओगे, क्या बनाना आता है आपको, आप कैसी कॉन्स्टिट्यूशन बना लोगे, पढ़े लिखे तो हो नहीं। तो फिर उनको रिस्पांस देने के लिए मोतीलाल नेहरू जी की चेयरमैनशिप में एक ऑल पार्टी कमेटी बनी। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई उसको नेहरू रिपोर्ट कहा गया। ठीक है, सो नेहरू रिपोर्ट वाज एक्चुअली प्राइमरली फ्रेम्ड इन रिस्पांस टू द साइमन कमीशन। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is correct regarding the Government of India Act of 1935? Which of the following statements is correct regarding
The Government of India Act 1935. A. It abolished diarchy in the provinces and introduced it at the center. B. It introduced separate electorates for Sikhs and Christians. C. It was opposed by both the Indian National Congress and Muslim League. Or D. It granted complete independence to India. What's the correct answer? Correct, correct, correct. So the statement which is correct regarding the Government of India Act 1935 is it abolished diarchy in the provinces and introduced it at the center. ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 से, उसको चेंज करके अब उसी डायरकी को सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया. ठीक. बाकी सेपरेट इलेक्टोरेट सिक्स एंड क्रिश्चियंस के लिए 1919 के ही एक्ट से आ चुके थे. इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंबाइंड वे में इन दोनों ने इसको अपोज किया हो. कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो देने की बात ही नहीं है. सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन ए. ठीक है, चलो let's move to the next one. Now the next question is, who was the president of the Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over? Who was the president of the Constituent Assembly before Rajendra Prasad took over? A. C. Rajagopalachari, B. Dr. B.R. Ambedkar, C. Dr. Sachidanand Sinha, or D. Jawaharlal Nehru? What's the correct answer, guys? Who was the president of the Constituent Assembly before Rajendra Prasad took over? So the correct answer is Hanji. The correct answer is correct, correct, correct. Dr. Sachidanand Sinha was appointed as the temporary president of the Constituent Assembly. Subsequently, Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent president. ठीक है, so the correct answer over here is option C. ठीक. सी राजगोपालाचारी बेटा हमेशा याद रखना, he was the last Indian Governor General of our country. ठीक है, माउंटबेटन के बाद प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. ठीक है, चलो let's move to the next one. Now the next question is, Pune Pact in 1932 was signed primarily between Pune Pact in 1932 was signed primarily between Pune Pact किन लोगों के बीच में साइन हुआ था? A. महात्मा गांधी एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, B. महात्मा गांधी एंड B.R. Ambedkar, C. B.R. Ambedkar and Jawaharlal Nehru, and D. the INC and the Muslim League. What's the correct answer? Pune Pact was signed between whom? Pune Pact was primarily signed between महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. जब कम्युनल अवार्ड इशू किए, अनाउंस किए रैमजी मैकडोनल्ड ने, ठीक है, जब कम्युनल अवार्ड साइन इशू किए ना रैमजी मैकडोनल्ड ने, कम्युनल अवार्ड में क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू द दलित्स वर अवार्डेड. उसके अगेंस्ट में, बिकॉज दैट मेड गांधी जी फील दैट इट विल लीड टू फर्दर डिवीजन ऑफ द इंडियन सोसाइटी. क्योंकि हिंदू और मुस्लिम का डिवीजन तो ब्रिटिशर्स कर ही चुके थे. कम्युनल अवार्ड की वजह से गांधी जी को लगा कि अब ये फर्दर हिंदू कम्युनिटी को भी और ज्यादा डिवाइड कर देंगे. तो उसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी स्टार्टेड अ फास्ट इन द यरवदा जेल. ही वाज एक्चुअली इन जेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन पुणे. तब फिर गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ, वेर इन दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू द जॉइंट इलेक्टोरेट्स विद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द बैकवर्ड कम्युनिटीज. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन B. Chal. Let's move to the next one. Now, the Indian Independence Act of 1947 declared India as Indian Independence Act of 1947 declared India as a dominion under British rule, B. a fully independent nation with a republican government, C. a dominion with no right to frame its constitution, D. a constitutional monarchy under the British sovereignty. What's the correct answer? The Indian Independence Act declared India as Anji. The correct answer is The correct answer over here is beta option A.
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब पास हुआ ना, तो उसने दो डोमिनियन बनाए, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान। रिपब्लिकन तो हम तब बने जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू दो डोमिनियन बने, ठीक। बस इतनी सी चीज रखी गई कि भाई भले ही हेड ऑफ द स्टेट उस वक्त ब्रिटिश मोनार्क होंगे, बट द ब्रिटिश मोनार्क विल बी बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द डोमिनियन, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन ए, ठीक। चल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which constitutional document was described as a charter of slavery by Mahatma Gandhi? Which constitutional document was described as a charter of slavery by Mahatma Gandhi? किस कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट को महात्मा गांधी ने चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था? ए, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और डी, रॉलेट एक्ट ऑफ 1919? व्हाट्स द करेक्ट आंसर? हाँ जी, क्या करेक्ट आंसर है भाई? So the correct answer is correct, correct, correct. It was Government of India Act of 1935, which was described as Charter of Slavery by Mahatma Gandhi. Okay, sure. Let's move to the next one. Now, the next question is, which act introduced the system of portfolio in the Indian administration? Okay, which act introduced the system of portfolio in the Indian administration, giving individual members of the Governor General's Council specific department? पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया? ए, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, बी, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, और डी, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861? पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ था भाई? व्हाट्स द करेक्ट आंसर? देखो, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने, एंड लॉर्ड कैनिंग डिड दैट बाय द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, ठीक है। 1861 के एक्ट से उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक। चल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ऑफ 1883 was related to what? The Ilbert Bill controversy of 1882 was related to what? A, expansion of legislative councils in India. B, granting Indians the right to elect members to the councils. C, allowing Indian judges to try British subjects. Or D, introduction of provincial autonomy in India? What's the correct answer? Ilbert Bill controversy किस चीज से रिलेटेड थी? ए, बी, सी और डी? हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर? Ilbert Bill controversy was actually related to allowing Indian judges to try British subjects. ठीक है, एक बहुत ही रैडिकल सा स्टेप लेने की कोशिश की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि इंडियन जजेस ब्रिटिश नेशनल्स को ट्राई कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। और ये व्हाइट मैन्स बर्डन को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो फिर कंट्रोवर्सी हुई एंड सब्सिक्वेंटली दिस पर्टिकुलर बिल वाज नेवर इंप्लीमेंटेड इन द कंट्री, ठीक। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन सी। चल, let's move to the next one. Now, the next question is, under which act was the East India Company's monopoly over trade in India abolished? Okay. Under which act was East India Company's monopoly over trade in India abolished? A, Pitt's India Act of 1784, B, Charter Act of 1813, C, Charter Act of 1833, or D, Government of India Act 1858? What's the correct answer? किस एक्ट के अंदर ईआईसी की मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया था? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। इट वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बाद चाइना, ओपीएम, ये दोनों ऑप्शंस बचे थे बस।
एंड ये दोनों ऑप्शंस की भी मोनोपोली 1833 के एक्ट से वो भी अबॉलिश कर दी गई थी. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन बी, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1830. ठीक. करेक्ट बेटा, करेक्ट करेक्ट. चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statements is incorrect regarding Government of India Act 1935? Which of the following statements is incorrect regarding the Government of India Act 1935? A. It provided for the establishment of federal court in India. B. It introduced diarchy at the center. C. It granted full independence to India. Or D. It extended separate electorates to various communities. What's the correct answer? हाँ जी, क्या करेक्ट आंसर है भाई? Hmm. So the correct answer is correct, correct. It never granted full independence to India through this act. Okay? So the incorrect statement regarding Government of India Act 1935 was option C. Okay? Chal, let's move to the next one. Now, the next question is, the term dominion status for India was first formally demanded in which thing? The term dominion status for India was first formally demanded under A. Nehru Report, B. Simon Commission Report, C. Cripps Mission's proposals, or D. Cabinet Mission Plan. What's the correct answer? Correct answer is correct. डोमिनियन स्टेटस की सबसे पहली बार फॉर्मली डिमांड जो हुई थी, दैट वाज अंडर नेहरू रिपोर्ट. डोमिनियन स्टेटस वाज अबाउट स्वराज. ठीक है. तो स्वराज की डिमांड की गई थी आपकी नेहरू रिपोर्ट में पहली बार. ठीक है. चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following acts was passed, which of the following acts was passed after the revolt of 1857 to reorganize British rule in India? इनमें से किस एक्ट को पास किया गया था टू रीऑर्गेनाइज द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ए. इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861. बी. चार्टर एक्ट ऑफ 1853. सी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858. और डी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. व्हाट्स द करेक्ट आंसर? हाँ जी. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज पास्ड to reorganize the British rule in India after the revolt of 1857? It was गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बेटा. रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था सी के थ्रू. ठीक है. रीऑर्गेनाइजेशन हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू. फिर सब्सिक्वेंट डिसेंट्रलाइजेशन और सारी चीजें हुई आपकी 1861 के एक्ट के बाद. ठीक है. बट बेसिक रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से. ठीक. चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following doctrines was evolved by the Supreme Court in Keshan and Bharti versus State of Kerala to protect fundamental rights from excessive constitutional amendments? Basic question है, easy सा question है ना? Which of the following doctrines was evolved by the Supreme Court of India in Keshan and Bharti versus State of Kerala to protect fundamental rights from excessive constitutional amendments? A. Doctrine of severability. B. Doctrine of prospective overruling. C. Doctrine of basic structure. Or D. Doctrine of harmonious construction. हाँ जी. What's the correct answer? Correct, correct. So it is option C. That is doctrine of basic structure. ठीक है. चलो, let's move to the next one. Now, the next question is, which of the following statements regarding right to constitutional remedies is incorrect? Which of the following statements regarding right to constitutional remedies is incorrect? A. It allows individuals to directly approach the Supreme Court in case of violation of fundamental rights. The Parliament can suspend this right during a national emergency under Article 359. It empowers the Supreme Court to issue writs for the enforcement of fundamental rights. And D. It allows for enforcement of both fundamental rights and DPSP. Which is the incorrect statement, guys? Anji. Which statement is the incorrect one over here? So the incorrect statement is option D. D for Delhi. ठीक है.
क्योंकि आप फंडामेंटल राइट्स तो इन्फोर्स कर सकते हो, आप डीपीएसपी थोड़ी ना इन्फोर्स कराओगे। डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, उनको इन्फोर्स करने के लिए आप आर्टिकल 32 को थोड़ी ना यूज करोगे। यस और नो, है ना? सो देयरफॉर करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन डी। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ the next question is the eminent domain doctrine is associated with which of the following fundamental rights? ठीक है, the eminent domain doctrine is associated with which of the following fundamental rights? A, Article 14, that is right to equality. B, Article 19, that is right to freedom. C, Article 21, which is right to life and personal liberty. Or D, Article 300A, which is about right to property. What's the correct answer? Eminent domain is related to which of the rights? Correct. Eminent domain is related to Article 300A of the Constitution of India. Okay? Chal. Let's move to the next one. Now, the next question is, which of the following statements regarding the right against exploitation is incorrect? Which of the following statements regarding right against exploitation is incorrect? A, it prohibits human trafficking, beggar, and forced labor. B, it allows the state to impose compulsory service for public purposes. C, it prohibits public employment of children below 16 years in hazardous industries. Or D, it is enforceable against both the state and the private individual. Which is the incorrect statement regarding right to property over here? Sorry, regarding Article 23 and 24. So the incorrect statement is option C. It prohibits employment of children below 14 years of age. 16 थोड़ी है, 14 years of age बेटा, 14 years of age। जब हम बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर की, तो चाइल्ड लेबर में 14 years of age की बात की गई है, 16 की बात नहीं की गई है। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ, which writ is issued to an authority to perform a public statutory duty that it has refused to perform? Which particular writ is used to or issued to an authority to perform a public or statutory duty that it has refused to perform? A, habeas corpus. B, certiorari. C, mandamus. Or D, quo warranto. What's the correct answer? Which writ is issued? Correct. The writ which is utilized in this situation is the writ of mandamus. ठीक है भाई, चल आगे बढ़ते हैं। Now, the next question is correct. In which case did the Supreme Court hold that the preamble is a part of the Indian Constitution and can be interpreted or can be used to interpret the Constitution of India? Supreme Court ने किस केस में कहा था कि preamble is a part of the Constitution and it can be used to interpret the fundamental rights? A, A.K. Gopalan versus State of Madras. B, Berubari Union case. C, Keshan and Bharti versus State of Kerala. Or D, S.R. Bommai versus Union of India. What's the correct answer? Anji, the correct answer is so the case in which the Supreme Court held that preamble is a part of the Constitution of India is Keshan and Bharti versus State of Kerala. ठीक है, करेक्ट। बेरूबरी यूनियन केस में उन्होंने कहा था कि पार्ट नहीं है, केशन एंड भारती में इट वाज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which amendment inserted Article 15, Clause 5, allowing reservations for socially and educationally backward classes in private educational institutions as well? किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया? A, 73rd Amendment Act. B, 86th Amendment Act. C, 93rd Amendment Act. Or D, 104th Amendment Act. What's the correct answer?
So the correct answer over here is Article 15, Clause 5 was added by 93rd Amendment Act of 2005. ठीक है, इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये प्रोवाइड कराया गया, करेक्ट करेक्ट, इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये चीज प्रोवाइड करा दी गई कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जा सकता है। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which writ is issued when a person is holding a public office without legal authority? ठीक है, which writ is issued when a person is holding a public office without any legal authority? A. Habeas corpus, B. Mandamus, C. Prohibition और D. Quo warranto? कौन सी writ issue होती है भाई in such situation? हाँ जी, which writ is issued? The writ which is issued in cases of a person holding a public office without lawful authority is quo warranto बेटा। ठीक है, quo warranto का मतलब होता है by what authority or by what warrant you are holding that office। ठीक है, so the correct answer over here was option D, that is quo warranto। ठीक है, चलो let's move to the next one। Now the next question is the principle of equality before law under Article 14 is based on which concept of law? The principle of equality before law under Article 14 is based on which concept of law? A. Rule of law, B. Doctrine of eclipse, C. Doctrine of severability or D. Due process of law? What's the correct answer? Correct. Equality before law is part of the concept of rule of law. ठीक है, चलो करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। चलो अब थोड़े से सोर्सेस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। स्लॉट वन में क्वेश्चंस आए भी हैं सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। So the first question is the Indian Constitution adopted the provision of joint sitting of the Parliament from which country? Joint sitting of the Parliament और joint sitting of both houses of the Parliament, इस कॉन्सेप्ट को हमने किस कंट्री से अडॉप्ट किया? ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी ऑस्ट्रेलिया और डी यूनाइटेड स्टेट्स? व्हाट्स द करेक्ट आंसर? जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट के प्रोविजन को हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर ऐड किया भाई? करेक्ट, इट इज सी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Now, the next question is, the concept of parliamentary privileges in the Indian Constitution is borrowed from where? The concept of parliamentary privileges in the Indian Constitution is borrowed from where? A. United States, B. Canada, C. United Kingdom or D. Ireland? What's the correct answer? Parliamentary privileges हमने कहां से इंस्पायर होकर ऐड किए? सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की इंस्पिरेशन हमने ली फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिट jurisdiction of the Supreme Court and the High Courts in India is influenced by which country's legal system? The writ jurisdiction of the Supreme Court and the High Courts in India is inspired from which country's legal system? A. France, B. United States, C. United Kingdom and D. Canada? What's the correct answer? रिट्स का सिस्टम कहां से इंस्पायर्ड है भाई? तो रिट्स के लिए इंस्पिरेशन हमने यूनाइटेड किंगडम से ली। देखो, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि जुडिशियल रिव्यू का इंस्पिरेशन हमने कहां से लिया, तो जुडिशियल रिव्यू इज फ्रॉम यूएसए। बट क्वेश्चन अगर रिट्स को लेकर है तो रिट्स इज समथिंग विच स्टेम्स आउट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये चीज याद रखना क्योंकि इसको लेकर कंफ्यूजन होता है लोगों को। ठीक, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज that which of the following constitutional provision is not borrowed from any foreign constitution but is unique to India? Which of the following constitutional provisions is not borrowed from any foreign country, foreign constitution but is unique to India?
A. Fundamental rights. B. DPSP. C. Panchayati Raj system. Or D. Parliamentary system. What's the correct answer? Which of the following things is not inspired from anywhere but something which is unique to India? So that is but obvious. Panchayati Raj system. The third tier of the governance in a federal system is something which is unique to our country, which is given a constitutional status as well. Okay? So the correct answer over here was option C. Chalo. Let's move to the next one. Now, the next question is, which constitutional feature borrowed from Ireland was originally inspired by the Spanish Constitution? Which constitutional feature, which is borrowed from Ireland, was originally inspired by the Spanish Constitution? A. Fundamental duties. B. Parliamentary system. C. Directive principles of the state policy. Or D. Judicial review. What's the correct answer? Correct, correct. It is DPSP. डीपीएसपी सबसे पहले आपको स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे। स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन आयरलैंड ने ली और आयरलैंड से इंस्पिरेशन लेकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन सी। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। So the provision for creation of new states and alteration of boundaries is inspired by the constitution of which country? The provision for the creation of new states and alteration of boundaries is influenced by the constitution of which country? A. Canada, B. United Kingdom, C. Australia, and D. South Africa. What's the correct answer, guys? तो देखो, ये जो पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दो इट इज यूनिक टू आवर कंट्री, ठीक है, दो इट इज समथिंग इट इज यूनिक टू आवर कंट्री, बट इट इज वेरी मच इंस्पायर्ड ऑन द कनेडियन पैटर्न। ठीक है, ठीक, तो इट इज वेरी मच इंस्पायर्ड ऑन कैनेडियन पैटर्न एंड हेंस द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन ए, दैट इज कनाडा। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। The next question is, the procedure for constitutional amendment in India is inspired by the model followed in which country? The procedure for constitutional amendment in India is inspired by the model followed in which country? A. United States, B. United Kingdom, C. South Africa, and D. Ireland. What's the correct answer? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर किस कंट्री से इंस्पायर्ड है? यूएस, यूके, साउथ अफ्रीका एंड आयरलैंड। करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज दैट द प्रोसीजर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन सी। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ, which of the following features of the Indian constitution is not directly borrowed from any specific foreign constitution? Which of the following features of the Constitution of India is not directly borrowed from any specific foreign constitution? A. Fundamental rights, B. DPSP, C. Presidential impeachment procedure, or D. Schedules in the Constitution. What's the correct answer? इनमें से कौन सा फीचर हमने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर ऐड नहीं किया? करेक्ट, फंडामेंटल राइट्स, यूएसए, डीपीएसपी, आयरलैंड, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगेन यूएस। Schedules in the Indian Constitution is not inspired from any other constitution. Rather, schedules is something which was inspired from Government of India Act 1935. ठीक है, चल, let's move to the next one. The concept of office of speaker and its role in India's parliamentary system is inspired by the system followed in which country? The concept of office of the speaker and its role in India's parliamentary system is inspired by the system followed in A. United States, B. United Kingdom, C. Canada, and D. France. What's the correct answer? हाँ जी, क्या करेक्ट आंसर है भाई? करेक्ट, 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 इट इज बेस्ड ऑन यूनाइटेड किंगडम। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ,
The provision for suspension of fundamental rights during emergency is influenced by the constitution of which country? The provision for or the provision of suspension of fundamental rights during emergency is influenced by the constitution of which country? A. United Kingdom, B. United States, C. Germany, and D. Canada. What's the correct answer? Suspension of fundamental rights is inspired from which country? So it is but obvious. It is from Germany. Okay? So the correct answer over here was option C. Correct. Chalo. Let's move to the next one. Now, the concept of judicial activism and public interest litigation in India. The concept of judicial activism and public interest litigation in India has been largely influenced by which country's legal system? जुडिशियल एक्टिविज्म और पीआईएल का कॉन्सेप्ट किस कंट्री के लीगल सिस्टम से इंस्पायर्ड है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी यूनाइटेड स्टेट्स, सी कनाडा और डी आयरलैंड. व्हाट्स द करेक्ट आंसर? जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पीआईएल कहां से इंस्पायर्ड है भाई? So activism and PIL is something which was inspired from the legal system of United States. ठीक है? चलो, let's move to the next one. Now, the doctrine of separation of powers, though not strictly followed in India, is inspired by the constitution of which country? The doctrine of separation of power, though not strictly followed in India, is inspired by the constitution of which country? A. United Kingdom, B. United States, C. France, and D. Germany. सेपरेशन ऑफ पावर कहां से इंस्पायर्ड है? हम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर. ठीक है? वी डू नॉट फॉलो. ठीक है? We do not strictly follow the doctrine of separation of power, but the inspiration of the same thing was actually taken from United States. ठीक है? बेटा यूके भी मर्जर या फ्यूजन ऑफ पावर पे काम करता है. यूके में भी तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का ही पार्ट है ना. हाँ या ना? यूके में भी तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का ही पार्ट है. तो सेपरेशन ऑफ पावर की का कॉन्सेप्ट एक्चुअली यूएस से स्टेम आउट करता है. ठीक है? चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. So the nomination of members to the Rajya Sabha is based on the system followed in which country? The nomination of members to Rajya Sabha is based on the system followed in which country? A. Canada, B. United States, C. Ireland, or D. Australia. Nomination of members to Rajya Sabha. हाँ जी. Nomination of members to Rajya Sabha किस सिस्टम पे बेस्ड है भाई? Correct. It is Ireland. Chalo. Let's move to the next question. Now, the last question of the day is the concept of social, economic, and political justice in the preamble is inspired by. The concept of socio-economic and political justice in the preamble is inspired by A. Ireland, B. Soviet Union, C. United States, and D. Germany. What's the correct answer? The concept of socio-economic and political justice in the preamble is inspired by. Correct. It is something which is inspired by the constitution of erstwhile Soviet Union. Correct, everyone. Correct. चलिए. So that's it from my side for today. ठीक है? आज के लिए इतना ही. नाउ इसके अलावा आपकी अगर बाकी किसी भी सब्जेक्ट के लेकर रिक्वायरमेंट होती है, नहीं बेटा एज सच कोई जरूरी चीज नहीं है. ठीक है? कि इट विल बी टफर ओनली जो सेकंड स्लॉट होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. यू कैन एक्सपेक्ट द पेपर टू बी ऑन द मॉडरेट साइड ओनली. जैसे पहला पेपर मॉडरेट साइड पे था, तो उसको भी आप मॉडरेट साइड पे ही एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है? सो आज के सेशन के लिए इतना ही. बाकी जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच बेटा. सेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक द सेशन एज वेल. रेस्ट अगर आप लोगों की कोई भी अलग से कुछ रिक्वायरमेंट हो, so you can let us know by putting up the comment in the comment section once the session is over. Okay? Baki, just take care of yourself, enjoy your day, keep studying, and I'll see you soon. ठीक? चल. Thank you so much everyone. I'll communicate that. बेटा. QT को लेकर मैं communicate कर दूंगा. ठीक है? चल. Thank you so much everyone. Thank you so much guys. Thank you so much.